A big hello to everyone. How are you doing today? I hope you're doing fine and taking good care of yourself. Okay? चलिए, welcome back to Learn Forward from Hi Kids Feather Cap. And in the last class हमने fruits के बारे में पढ़ा था ना? And I'm sure आप सब लोग daily fruits खाते होंगे. Very good. And now today we will learn about vegetables. Okay? We'll learn about vegetables. So let's start our today's class. Okay, so what are vegetables? Vegetables come from plants. Do you know that? Vegetables कहाँ से मिलती है हमें? Vegetables plants से मिलती हैं, ठीक है? कुछ vegetables plants के ऊपर grow करती हैं और कुछ उनके अंडर, कुछ ग्राउंड के अंडर ग्रो करती हैं, ठीक है? जैसे कि पोटैटो, राइट, एंड कैरेट, radish, these all vegetables grow under the ground. उनके रूट्स में से आती हैं, ठीक है? सो आप सब लोग जंक फूड्स तो खाते होंगे, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मैगी, है ना? बट उनसे आपको एनर्जी मिलती है, उनसे आपका आप हेल्दी होते हो? नहीं. You will not get healthy by eating junk food. You will get healthy by eating vegetables and fruits. Okay? आप वेजिटेबल्स खाने से हेल्दी होंगे, बट जंक फूड खाने से आप मोटे होंगे, ठीक है? So we should all eat these vegetables. These are very healthy for our body. इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, तो हमें ये सब वेजिटेबल्स खानी चाहिए. ओके, चलिए, now let's learn about them. The first one is potato. First one is potato, and I love potatoes. Do you love them also? Because हम potatoes किसी के साथ भी खा सकते हैं, है ना? चाहे हम उसे कॉलीफ्लावर के साथ खाएं, चाहे उसे हम स्पिनच के साथ खाएं, चाहे उसे हम पीस के साथ भी खा सकते हैं, और उसे हम टमाटो के साथ भी खा सकते हैं. तो पोटैटो एक ऐसी वेजिटेबल है जो किसी के साथ भी बन सकती है ना? और आर सबकी फेवरेट फ्रेंच फ्राइज, वो भी किससे बनते हैं? पोटैटो से बनते हैं, है ना? I'm sure everyone here loves French fries because I love French fries a lot. So French fries बनते हैं potato से, okay? It comes from potato. चलिए, now next vegetable is carrot. Next is carrot. It is orange and red in color. It is orange and red in color. It is very healthy. Now next is cabbage. Next is cabbage. This is cabbage and it has many leaves on it. इसके ऊपर बहुत सारी leaves होती हैं, ठीक है? It is called cabbage and it is green in color. It is green in color. Next is cauliflower. Next is cauliflower. It's a flower and इसके साइड में तो बहुत सारी leaves होती हैं, पर इसके बीच में इसकी मेन वेजिटेबल होती है जिसे हम खाते हैं, ठीक है? जिसे हम कुक करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अनियन. नेक्स्ट इज अनियन. अनियन भी सब लोग खाते होंगे, है ना? इट्स वेरी क्रिस्पी एंड टेस्टी. अनियन को हम रॉ भी खा सकते हैं और उससे हम कुकिंग करने के बाद भी खा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्यूकम्बर. नेक्स्ट इज क्यूकम्बर, जिसे हम सैलेड बना के खाते हैं, है ना? क्यूकम्बर, अनियन, कैरेट, इन सब का हम क्या बनाते हैं? सैलेड बनाते हैं और फिर हम उसे अपने लंच के साथ खाते हैं ना? इट्स वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी. ओके, दैट्स क्यूकम्बर. और नेक्स्ट इज पंपकिन. नेक्स्ट इज पंपकिन. ये आपने देखा होगा अपनी हैलोवीन पार्टी में. देखा है आपने? हैलोवीन पार्टी में पंपकिन के डेकोरेशंस होती हैं. ओके, it is called pumpkin. It is yellow and green in color. It is sometimes yellow and sometimes green in color. Okay, and it can be sweet or it can be sour. Okay, it can be sweet and it can be salty. आप इसे two ways cook कर सकते हैं, sweet and salty. So this is pumpkin.
Next is spinach. Next is spinach. Spinach gives us lots of iron. Okay. Spinach gives us lots of iron, which is very important for our body. Okay. So spinach are leaves. Spinach are this kind of leaves. Next is beetroot. Next is beetroot. This is dark red in color and it is very good for our blood improvement. Okay. अगर हम इसे खाएंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारा ब्लड बनेगा और हम बहुत हेल्दी हो जाएंगे. ठीक है. इट इज बीटरूट. नेक्स्ट आर पीस. नेक्स्ट आर पीस. पीस मतलब मटर. पीस मतलब मटर. चलिए अब बताइए मुझे, क्या आप सब लोग अपनी अपनी मम्मी की हेल्प कराते हैं मटर पील करने में? कराते हैं ना. तो यही है मटर. इसे बोलते हैं पीस. ओके. नेक्स्ट आर टमेटोज. नेक्स्ट आर टमेटोज एंड दे आर रेड इन कलर और ये भी हमारे सैलेड में भी यूज होते हैं. ठीक है. These are tomatoes. These are red in color. Okay. And the last one is lady fingers. Next one is lady's finger. Lady's finger भी बहुत healthy होती है and this is in green in color. So हमें सारी vegetables खानी चाहिए and especially green vegetables. Okay. So all the vegetables are very healthy for us. Okay. Because they come from plants. They come from plants. कुछ plants की stem होती हैं, कुछ उनकी roots होती हैं, है ना, और कुछ उनके flowers होते हैं. तो अलग अलग सब्जियां, अलग अलग vegetables अलग अलग plants के parts से आती हैं. Okay. And they are very healthy for us because they are naturally grown. ये naturally grow करती हैं. Okay. So promise me that you will eat vegetables daily in your life. Will you do that? Very good. Now I will see you in the next video. But before that, we have one more activity that we will do right now. And the next activity is this one. Match the vegetables with their shadows. These are some vegetables and these are the shadows of them. See, first one is onion. We know that it is onion. Now tell me, which one is the shadow of onion? Can you please tell me? Take a look and tell. Last one. Onion shadow is last one. We will match this picture with the last picture. Okay. Next is tomato. Next is tomato. Can you tell me which one is the tomato? This one, second one. We'll match this picture with the shadow of tomato. Next is pumpkin. It is very easy. Come on everyone, tell me. Pumpkin is the first one. We'll go up and match with the pumpkin. Next is cauliflower. Next is cauliflower, the one with leaves I told you. Yes, the cauliflower will match with the second shadow. Okay, cauliflower goes up to the second shadow. Like this, we have matched the vegetables with their shadows. Okay, so we have done this activity, but your homework is to eat vegetables and stay healthy. Okay, I will see you in the next video. Till then, happy learning. Bye bye. Take care.